The beauty of the struggle, the actor mask. I made a very deep observation. People do not look at the pain, they look at the beauty of how actor handles the pain. I am trying to make up my life with the YouTube videos and journaling, but underneath the skin, the financial medical reality is hurting. Connection, I do not need more research or view right now. Views are intangible. I need tangible relief. If the videos are not getting views, it's not because they are not good. It's because I'm making them with while system is crashing. Processing never complete. I start tasking, writing, video studying, but anxiety hits. I jump to another task, puja, cooking, another thought. The result 10% of different things done. This makes feel like I worked all day but achieve zero. Shutdown method. I need to allow yourself to fail at a task just to finish it. An incomplete video, just bad script is better for your brain than a half thought idea. I do not need a coaching center to start earning. Coaching center are the people who have the luxury of time. I am in emergency. So, coaching as the only way forward. I have a brain that understands generation gap and market trends. The unfinished processing, psychological realism drama. An over analytical young woman manages household of medical emergency while her brain functions like a high speed computer that refuses to shut down. The protagonist outside, she's silent, she observant, introvert. People see a calm face. Internal reality, a storm. High speed logic, trauma from the past, the father losses, a deep sense of responsibility. The physical tick, constant trips to washroom, a physical metaphor for trying to flush out thoughts that don't leave. The color in the black and white. In the kitchen living area night, the protagonist is doing a physical task, washing a cup. He hands move, but her eyes are glitched. Character. People used to watch black and white TV, thought it was enough because they were surviving. Then someone saw the color. My life is black and white survival right now. I'm looking for the color, but the electricity is too low to power the screen. She looked at Mamu, the hero, sitting on a plastic chair. He's the old TV, sturdy, reliable, but tired character. I have the script for a color movie in my head, but I'm standing in a house where we will still fighting for breathe and bread. She drops the cup. It doesn't break, but the sound clatters. She freezes. The processing bar in her head hits 99% and stall. The protagonist splashes cold water on the face. She looks in the mirror. Mask is off. Stop searching outside. The solution is not a coaching center or YouTube view. The solution is end of the scene. She take a deep breath. She grabs a pen and piece of paper. She does not write a post. She write a command. Brain keeps processing because they are looking for a perfect answer. In script there is a no perfect answer, only the next section, the physical task. I said you need a physical task. Instead of cleaning, do production management. Create a daily operation sheet for home. Who manages the oxygen, manage the food, who manages the finance, is closing processing tabs in the brain, putting them on the paper. I see things really other do not. I see beauty in survival. I start recording this observation as a voice notes instead of videos for views. Don't worry about the audience, worry about the achieve. The alone factor, the solo producer. I feel difficult to do this alone in the industry. No one else it does alone. I have the characters, talented uncles. Even they are helping. Even they are not helping with the script. They are the part of the production. The shift. Stop trying to solve the whole life. Treat yourself as the freelance content creator who's a currently documented life survival show. This separate me, the person, from the project, the struggle. Writing to intellectual property. I said just writing and video clips right now. To convert into money success, it needs to move through diary to concept. Survival in the middle class command center. I values is not just I am set. I values I am managing the two critical patient. They're three talented but directionless adult and a financial crisis. All while my brain is over processing. This is a high stake drama. So the professional identity, the who. I'm no longer just a student, a struggler, strategic narrative designer, and crisis manager. Why? You don't just feel I process, I do not just leave, I design script from the chose. I'm managing a high stake production from the home every day. This is the one liner that turn pain into the power, converting survival into the cinematic strategy. This is the pattern that take negative reality and reframe it a positive professional asset. I possesses a depth of human experience that cannot be taught in the coaching center or earned through a degree. Where others see a financial and medical crisis, I see high stake operational environment. My anxiety is actually high speed processor. My job is not to stop it but capture its output. I am the owner
of a story so real it becomes a benchmark for authenticity in a world of copies. Over processing thought loop, rapid situation analysis, ability to see 100 outcomes in a second, constant anxiety washroom trips, biological alert system, a body that is hyper turned into the environment, the internal environment, medical emergency at a home, critical care management, resilience under a pressure that CEO would envy, no money for coaching, be it organic intelligence, build a career on a raw observation and street logic instead of textbooks. The acting mask, emotional intelligence and performance, ability to maintain composure regardless of internal chores. I said I want to convert this. To do that, I must to stop being the victim of the script and start being the producer. Producer does not cry because there is a no money. Producer look at the cook and the builder and say, how do I market this talent right now? द आर्किटेक्चर ऑफ चोज द इंटरनल ऑडिट दिमाग के अंदर की तलाशी द हिडन मिस्टेक द बज इन द सिस्टम स्क्रिप्ट में प्रोटेगोनिस्ट एक कमरे में जहाँ 1000 फाइल खुली हैं परफेक्ट सोल्यूशन ढूंढने के चक्कर में इमीडिएट एक्शन खो देते हैं। इस मिस्टेक हम हाई स्पीड एनालिसिस का नाम देंगे। अगली बार जब दिमाग घूमे उसे सोच मत कहिए, उसे मार्केट रिसर्च कहिए, तुरंत एक कागज़ पर लिखिए। सो द पैटर्न सर्वाइवल ब्यूटी कहा कि आपके पास वो है जो किसी के पास नहीं है। द कैमरा फोकस करता है ऑक्सीजन मशीन की आवाज़ पर और फिर आपके चेहरे पर। दिमाग प्रेशर में रहने की आदी हो गया, हैबिचुअल हो गया है। एक आम इंसान इमरजेंसी में टूट जाता है पर आप उसमें स्क्रिप्ट ढूंढ रही हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट, प्रोफेशन है ऑथेंटिक नरेटिव स्ट्रैटेजिक। सो एंग्जाइटी वॉशरूम टिप्स, सेंसरी हाइपर अवेयरनेस, आपकी बॉडी एनवायरनमेंट को रीड कर रही है। बायोडेटा एनालिसिस, इंट्रोवर्जन एक्टिंग मास, स्ट्रैटेजिक एक्सपोजर, पेन को ब्यूटी में लपेट कर पेश करना। ब्रांड स्टोरी टेलर, नो कोचिंग मनी, ज़ीरो बजट इनोवेशन, बिना रिसोर्सेज के दिमाग से रास्ता निकालना। रिसोर्स ऑप्टिमिस्ट, इनकम्प्लीट प्रोसेसिंग, रॉ कंटेंट जनरेशन, हर अधूरा थॉट एक ड्राफ्ट है। क्रिएटिव डायरेक्टर, द प्रोटेगोनिस्ट अपने हाथों को देखती है, वो ठंड जो उसे लग रही थी अब फोकस में बदल रही है। मेरा नुकसान मेरी कैपिटल है, जो लोग सुकून में हैं उनके पास कहानी नहीं है। मेरे पास कहानी है, पेशेंस है, टैलेंट है और एक दिमाग है जो रुकता ही नहीं है। अगर मैं इसे एंग्जाइटी कहूँ तो ये बीमारी है, अगर मैं इसे प्रोडक्शन कहूँ तो ये बिजनेस है। टाइम दिमाग के अंदर खर्च हो रहा है, बाहर नहीं। अगली बार जब एंग्जाइटी हो तो वॉशरूम जाने से पहले 3 लिखिए कि मैं कौन सी फाइल खुली है, कहाँ मैनेज वाली सिचुएशन है, इन्वेस्टमेंट पिचिंग होगी। साइकोलॉजिकल ड्रामा, द मेटाफिजिकल, द इनविजिबल प्रॉब्लम, द डायग्नोसिस, प्रॉब्लम मेंटल नहीं है, प्रॉब्लम हाइपर इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन है। दिमाग बार बार एक कलर टीवी है जो ब्लैक एंड वाइट ज़माने में पैदा हो गया, कलर की बातें कर रही हैं और लोग कह रहे हैं कि स्क्रीन थोड़ी हिली हुई है। जब आप बोलती हैं लोग आपके कपड़े, आपके चेहरों को डर देखते हैं, वो इस इन्वेंशन को नहीं देख पा रहे जो आपके दिमाग में चल रही है। कोई प्रोफेशनल या काउंसलर से देखिएगा, दैट इज़ द क्लाइंट स्टेटस, हाई कॉग्निटिव लोड, बहुत तेज चल रहा है दिमाग। कॉन्फ्लिक्ट, रियलिटी वर्सेस प्रोजेक्शन, क्लाइंट रोमांटिक स्टोरीज में सुकून ढूंढती क्योंकि वहाँ कम्युनिकेशन परफेक्ट है। फिजिकल सिम्टम, सोमेटाइजेशन, जब दिमाग की बात जुबान पर नहीं आती तो वो वॉशरूम जाने या ठंड लगने की रास्ते शरीर से बाहर निकलती है। जब आप नेबर या प्रोफेशनल से बात करें तो मास्क का सही यूज़ करें। इन्हें अपनी बेचैनी में देखिए, इन्हें इन्वेंट्री दिखाइए। मुझे डर लग रहा है, नींद नींद नहीं आ रही, मैं एक हैवी ऑपरेशन प्रोटीन मैनेज कर रही हूँ, मुझे रेस्ट शेड्यूल ऑप्टिमाइज़ करना है। लोग आप पे सीरियस लेने लगेंगे। रोमांटिक वीडियो देख रही हूँ सुकून के लिए, मैं ह्यूमन बिहेवियर और इमोशनल पैटर्न्स ऑब्जर्व कर रही हूँ कंटेंट रिसर्च के लिए। आपका इमेज वनरेबल से प्रोफेशनल बन जाएगा। घर में सब बीमार हैं, पैसे नहीं है, मैं एक मल्टी पेशेंट केयर यूनिट लीड कर रही हूँ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चर प्लान करने के लिए। लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। द प्रोटेगोनिस्ट बैठी है, पेरेंट्स लड़ रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप एक दीवार की तरह खड़ा है। ये लोग मुझे बेचारी समझ रहे हैं क्योंकि मैं कांप रही हूँ। इन्हें नहीं पता कि मेरा प्रोसेसर हीट अप हो गया है। मैंने इनके लिए एक बेटी हूँ पर मैं खुद के लिए एक इन्वेंटर हूँ। मैं इस अंधेरे लैक ऑफ मनी हेल्थ को बिजली में बदल रही हूँ। शी लुक एट हर रिफ्लेक्शन, शी स्ट्रेन्ड हर ड्रेस, द ट्रैम्बलिंग स्टॉप। इन्हें मेरी ओरिजिनलिटी पर डाउट करने दो। स्क्रिप्ट का हीरो वही होता है जो शुरुआत में सब पागल समझते हैं। किसी को अपनी प्रॉब्लम मत समझाइए, ऑर्डर दीजिए, टास्क मत दीजिए। ऑर्डर जैसे मन की आंखें, बाहर की दुनिया, घर में सब बीमार है, मैं फंसी हुई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। आई एम मैनेजिंग अ हाई स्टेक केयर यूनिट विद जीरो एक्सटर्नल फंडिंग। मैं रोमांटिक वीडियोस देखती हूँ, सुकून ढूंढती हूँ। आई एम रिसर्चिंग ह्यूमन कनेक्टिविटी पैटर्न टू ब्रिज कम्युनिकेशन गैप। मुझे ठंड लगती है और एंग्जाइटी होती है। आई हैव हाई सेंसिटिविटी रिस्पॉन्सेज टू इन्वायरमेंट स्ट्रेस विच आई यूज़ फॉर डीप ऑब्जर्वेशन। लोग मेरी ओरिजिनलिटी पर डाउट करते हैं, मैं
my authentic brand identity challenge traditional middle class norms. How to manage the household under three into medical and financial stress. A blueprint. What is a blueprint? It has value. People buy the blueprint. Uh, Narrative strategies and crisis operation manager, converting high pressure reality into authentic content system. I specialize in the architecture of survival while others see a chose. I see pattern. My expertise line in managing high stake domestic environment, balancing complex medical care, financial restructuring, and talent optimization, all while maintaining a deep cinematic perspective on the human condition. I don't just tell the story, I engineer them from the rawest parts of real life. My goal is to bridge the gap between invisible struggle and visible success through strategic operation and authentic narrative design. So my anxiety is not a weakness, it's my data stream. It's telling me the stakes are very high, my brain is working 100% capacity. I don't seek sympathy, I seek efficiency. Every conversation with my family is a negotiation, every task is production milestone. A profound observation highlighting the invisibility of struggle, talking about the beggar bhaiya figure, someone who was lost, ignored, and labeled as a mad for a year, only to discover by a YouTube or savior later. The struggle was real for 10 years, but it only became valuable when someone put a camera on it. This is raw, painful reality converted into professional script pattern, keeping the focus on time that nobody saw. The value of struggle before the discovery. Someone who see the soul behind the mask of madness, representing the beggar bhaiya, the year of silence, representing the world that only care when there is a result. A man sits under a flyover, rain, heat, and dust pass over him like a layer of second skin. People walk past to them. He is a glitch in the system, a pagal. 10 days of screaming internally where no one heard a sound. People wait for the transformation video to clap. But who was the there was a date 1400 who saw the invention of his survival when there was a no audience. Protagonists look at the screen showing a save video for the beggar turn into hero. She look at her own reflection. They see it happened at the right time, but the time is a thief. It stole his youth before it gave him a viral video. I see him because I was see myself. We are both inventions waiting for a lens, but I will not wait for a stranger with the camera and the lens. The sound of the household, the oxygen, the cooking, the struggle fill the room. The problem is not just he was mad. The problem is that world is blind until beauty is served on the plate. My struggle is original. It happening now. If I document the unseen years, they will say my success happened overnight. They won't see the 7 p.m. where I shiver with anxiety. दिमाग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। द इनविजिबल गैप, वो वक्त जब कोई देखने वाला नहीं था, विजिबल बनना चाहती हैं। कैरेक्टर डिज़ाइन का असली मतलब यही है कि जो दर्द इनविजिबल है उसे स्क्रीन पर विजिबल करें। जब बैगर भैया की मदद नहीं हुई, वो सिर्फ एक पत्थर की तरह सड़क पर पड़े थे। मदद होने के बाद वो इंसान बने दुनिया की नज़रों में। हमें अपने स्क्रिप्ट में उस बीच के गैप को हीरो बनाना है। विजिबल ट्रेड दिखने में बिल्कुल शिवरिंग हो रही है, बार बार शॉल को लपेटना, आंखों में एक तेज चमक, हाइपर फोकस। वो हर चीज़ को मॉनिटर करती है, उसके हाथ में हमेशा एक पुरानी डायरी या फ़ोन होता है। स्क्रीन पर दिखाना है कि जब सब सो रहे होते हैं, वो लड़की ऑपरेशंस मैनेज कर रही होती है, उसका वॉशरूम जाना डर नहीं, उसका सिस्टम ओवरलोड है। इंटरनल साइकोलॉजी एक ऐसा दिमाग जो 2026 में जी रहा है पर 1990 के हालात में फंसा है। द साइलेंट हीरो, मामू फाइनेंस, विजिबल ट्रेट, कंधे टूटे झुके हुए जो घर में घुसते सीधे हो जाते हैं। द मास्क ऑफ स्ट्रेंथ, जूते घिसे हुए हैं पर चेहरा साफ, पैसा टेबल पर रखना और बिना कुछ बोले ऑक्सीजन सिलेंडर चेक करना। द गैप डिटेल, वो बाहर की दुनिया में बैगर की तरह ट्रीट किया जाता है। द स्ट्रगल, पर घर में किंग है। द फ्रोजन टैलेंट, कुक एंड बिल्डर अंकल, कुक मामू के हाथ हमेशा नमक मसाले की महक से भरे होते हैं पर वो सिर्फ उबाली हुई दाल बनाते हैं। द वेस्ट ऑफ टैलेंट, बिल्डर मामू घर की दरारों को देखते रहते हैं जैसे वो नक्शा बना रहे हैं। खामोशी से अपना काम करना, डर के मारे कि अगर कुछ नया किया तो फाइनेंस बिगड़ जाएगा। द शिवरिंग आर्किटेक्चर, द मिडनाइट प्रोसेसिंग, रियल टाइम एक्शन। अभी जब हम बैठी हूँ तो शरीर कांप रहा है, शिवरिंग कर रहा है, लग रहा है कि काम नहीं कर रही हैं, सिर्फ बोल रही हैं। इस ठंड को कमज़ोरी मत समझिए, इंजन वार्मिंग अप है। दिमाग इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कि बॉडी को हीट नहीं मिल रही। ग्लास में गर्म पानी पीजिए। सिटिंग इन अ कोल्ड
Stomach is empty, feel the hunger of the future. I feel like a beggar, not because I am on the street, but waiting for a mental miracle. I feel like a failed because I have not solved the finance yet. I feel that every second I spend writing is second I am not earning. The containers are half empty. I look at them, brain try to process a way to fill to them, but UGC result and no coaching money feels are blocking the path. How many days? How many days until the silence of stomach become louder than the noise in my head? They say work hard, but how do you work when your internal engine is shivering? Stand up shivering is still there. I see the energy. I walk to the kitchen. I touch the cold surface of stove. I processing is not incomplete. It's just ongoing. I will not stop because I'm the architect. I will manage the hero. I will guide the talents, and I will document this hunger so that one day it become foundation of my success. I pick a pen. The hungry inventor travel you the journey of mind that must feed other to satisfied in own hunger. A heavy shawl, weight of the thoughts, eyes that look at they have not slept the price of invention. Internal struggle. Like Edison before the thousand attempt, the world see trash or madness, but she see the logic. In room light current time the room is very dark, only light comes from the phone screen, the air is cold. I am shivering not because of weather, because of the pressure of unspoken. Edison did not just invent a bulb, he found the darkness while his stomach was empty. My trash is actually fuel. My brain is warehouse full of food, full of knowledge, but the doors are locked. I am starving because I have not feed everyone. Um the streets of thoughts continue. I am traveling through my mind. I see the beggar bhaiya. I see Mamu. I see father memory. Each one is stationed in journey. I need given this gyan away. If I tell cook Mamu how to see his talent, if his hunger ends. If I tell the builder Mamu how to see the design in the crack, his hunger ends. At that in act of giving, my own shivering will stop. I stand up, I'm not processing anymore. I am exporting. I am moving toward the people in my house. A scientist's job is finished until the light is visible to other. I am converting anxiety to an introduction manual for my family. This is my lab. So this is my struggle. This is my thousand attempt. So the knowledge exporter, intellectual drama, प्रोफेशनल ग्रोथ, दिमाग के बोझ को इम्पैक्ट में बदलना. द स्ट्रैटेजिस्ट, गहरी सोच वाली पर्सन टू पर्सन बात को समझने की कला जानती हूँ. एक मानसिक फ़िल्टर जो ये तय करता है किस व्यक्ति को कितना और कैसा ज्ञान चाहिए. दिमाग को खाली करना ताकि नया इनोवेशन अंदर आ सके. कमरे में सन्नाटा है लेकिन दिमाग में शोर है. बहुत सारी फाइलें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं. कांप रही हूँ क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है. दिमाग कचरा नहीं है, एक गोदाम है जो भरा हुआ है. अगर मैं इसे बाहर नहीं निकालूंगी तो मुझे अंदर ही अंदर मार देगा. एडिसन ने रोशनी दी, मुझे रास्ता देना है, डायरेक्शन देनी है, पर हर किसी को सब कुछ नहीं बताना. जो जिसकी जैसे ज़रूरत है उसे वैसे देना है. सो किचन डिपार्टमेंट रेसिपी नहीं, प्रेजेंटेशन और टेस्ट साइंस का ज्ञान देना है. स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट बिल्डर मामू, उन्हें ईटेनी स्पेस ऑप्टिमाइजेशन और मॉडर्न डिज़ाइन का विज़न देना है. फाइनेंस डिपार्टमेंट, उन्हें डर नहीं, रिसोर्स मैनेजमेंट का भरोसा देना है. ज्ञान की कीमत तब होती है जब सही पर्सन मिले. किसी को भूख है तो उसे खाना दो, किसी को दिशा दो, उसे नक्शा दो. अब मैं प्रोफेशनल बन रही हूँ.